Hello everyone, welcome back. This is Shubham from Team Prepzone. Today I'm again here with some QA challenges series, and we are going to discuss a very beautiful and a very advanced concept. How can it be solved using some shortcuts? Okay. And before moving to the question, just a couple of 3-4 announcements for you guys. If you haven't taken MCAT 2211, take it, because I'll be coming live on Saturday evening to discuss that particular mock live. I believe that quant section was difficult, so I'll be coming live to discuss that. Second, All India Open mock. If you haven't taken it, take it. It's a wonderful mock. Average score so far is not that high, and I'm really excited to see how do you guys do it. It will be a real CAT challenge, a pre-CAT examination on your reality check of your preparation and how you're doing. So do take it. Third announcements, we have marathon events starting from September 20th, which is next Monday. So if in case you want to practice, only practice good quality level of questions, every day one LRDI set with solutions, discussions, quant, RCs, that will be a go-to group. If you're not really someone who focuses on live sessions, this will be your go-to group. And if you focus on live session, we have a booster batch coming very, very soon. So very stay tuned. And with this, let's jump on to the first question, the question of the day for today. So question says, Amit decides to play cards in a casino. There are a total of 227 players, and everyone is sitting on a circular table numbered 1 to 2 to 7. But in between the game, a fight breaks out and the players start shooting each other in the order. Person sitting on first chair kills second, hands over the guns to third. Okay. And it is known that Amit is the last person to die. So find out the chair number where he should sit. Should be he should sit. Okay. So if you can recall, or if you have solved, or if you have come across this concept, this is nothing but a Josephus problem. If you're not familiar with this, Google kar lo, watch videos of it. Okay, Google it, read Wikipedia notes so that you know what is Josephus problem. Okay, this is Josephus problem. And what it is, this series is just to give you a brush up of what this problem or these unique concepts are. So what Josephus problem says, if you have a circle, right? Say for example, in the same question, you have 227 players sitting, right? 1, 2, 3, so on and so forth till 227, right? You have 227 players sitting on the circle. So now what's happening is, एक लड़ाई हुई, ठीक है? First person shoots the second person, which means second person dies. अभी gun is with third, ठीक है? So third person will actually shoot the fourth person, and he will hand over the gun to fifth. Fifth will actually shoot the sixth person. So on and so forth. ये पूरा loop चलेगा, right? पहले में सारे even numbers will just go away, and then क्या होगा? Then फिर जो बचेगा, and then similarly we will have these iterations. So for example, if I just do it in a small iteration, say मेरे पास 6 या 7 लोग हैं, say I have 7 people, 1, 2, 3, 4, 5, this is 6 and this is 7, ठीक है? And if I have to perform this iteration, what I'm doing is, 1 ने second को shoot कर दिया, second is dead, थर्ड के पास गन आ गई, थर्ड ने फोर्थ को शूट कर दिया, फिफ्थ के पास गन आ गई, सिक्स्थ को शूट कर दिया, सेवंथ के पास गन आ गई, सेवंथ ने अब 1 को शूट कर दिया, गन थर्ड को दे दी, थर्ड ने फिफ्थ को शूट कर दिया, सेवंथ के पास गन आ गई और थर्ड को शूट कर दिया. सो विच मींस लास्ट पर्सन टू सर्वाइव इज 7 एंड सेकंड लास्ट पर्सन टू सर्वाइव इज थर्ड. ठीक है, मुझसे ये पूछा है कि अमित सेकंड लास्ट पर्सन है सर्वाइव करने के लिए और इज द लास्ट पर्सन टू डाई. अंडरस्टैंड द लैंग्वेज. अगर डाई करने में लास्ट पर्सन है, सो सर्वाइव करने में विल बी द सेकंड लास्ट पर्सन. तो मुझे चेयर नंबर निकालना है कि वो कौन से सीक्वेंस में बैठेगा, राइट? सो जब भी इस टाइप की प्रॉब्लम्स होती है, जोसेफस प्रॉब्लम, हमारे पास टिपिकली 2 टाइप की क्वेश्चंस आते हैं कि हु इज द पर्सन हु इज द लास्ट वन टू सर्वाइव. ठीक है, लास्ट सर्वाइव एक कौन कर रहा है, एंड लास्ट वन टू डाई व्हिच इज सेकंड लास्ट सर्वाइव कौन कर रहा है. ठीक है, सो इसका एक ही मेथड होता है. जितने भी टोटल लोग होते हैं 7, फॉर एग्जांपल वी हैव 7 पीपल हियर, राइट? सो अगर मुझे लास्ट सर्वाइव निकालना है, व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट ट्राई टू put 7 in this format, 2 to the power m plus n. ठीक है, now I have to choose the maximum possible value of m. ठीक है, so मुझे पता है अगर m 3 हो जाएगा, 2 to the power 3 8, 7 से ज्यादा हो जाएगा. So the maximum power of m is 2. ठीक है, which is 2 to the power 2 4 plus 3. तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आ गई, n का वैल्यू आ गया 3. So now अगर n का वैल्यू 3 आ गया, तो जो लास्ट सर्वाइव करता है उसका आंसर हमेशा होता है 2n plus 1. ठीक है, which means 2 into 3 plus 1, 7th पर्सन जो भी है यहाँ पे
वो सर्वाइव करेगा। एंड मैंने देखा था कि 7th पर्सन इज द वन हु सर्वाइव्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखना। एंड अगर मुझे सेकंड लास्ट पर्सन सर्वाइव का देखना है या फिर द लास्ट पर्सन हु डाइज, इसका मुझे डायरेक्टली शॉर्टकट करना है। सो व्हाट आई डू इज आई ट्राई टू एक्सप्रेस 7 इन द टर्म्स ऑफ 3 into 2 to the power m plus m। ठीक है, मुझे पता है अगर m की वैल्यू 2 हो गई तो इट इज 4 into 3 12, वो नहीं हो सकता, which means m का वैल्यू कितना होना पड़ेगा, m will have to be equals to 1। ठीक है, तो this is 6, which means n का वैल्यू कितना होगा, n will be equals to 1। and again सेम मैं कर दूंगा, 2n plus 1 will be my answer। 2n plus 1 कर दिया तो कितना आ गया 3। and I have seen that the third पे जो पर्सन बैठा था that is the person who basically dies last or who basically is the second last person to arrive। अगर ये कॉन्सेप्ट तुमको क्लियर हो गया है, then before jumping onto this particular problem, solve this question and मुझे कमेंट में अपने आंसर्स बताना कि फॉर एग्जांपल I have 127 people। ठीक है, अगर मेरे पास 127 people है तो मेरे पास दो क्वेश्चन है, who is the last person to survive, ठीक है, who is the last person to survive and who is the last person to die। These are the two questions I have for you। If you have understood this concept, इसको comment करके मुझे इसके आंसर्स बताओ। Meanwhile, coming back to the initial question, मुझसे पूछा है सेकंड लास्ट पर्सन का। ठीक है, अमित इज द सेकंड लास्ट, तो वो कौन सी पोजीशन पे बैठेगा। सो आई नो सेकंड लास्ट के लिए लॉजिक इज 3 into 2 to the power m plus m। ठीक है, नाउ आई नो ये 64 होगा तो 64 into 3 इसके आसपास होगा। इफ दिस इज 128 into 3 will be 300 something, so it will overtake this, so I know this has to be 64। if this is 64 into 3 is nothing but 192। if this is 192, मैं इसको subtract करूंगा, my answer will be 35, which means n will be 35। if n is 35, so second last person to survive has to be 2 into n plus 1, which means 71st seat पे जो person बैठेगा वो second last person होगा to survive, which means chair number for Amit has to be 71, and this is the answer for this question। I hope this concept is clear। It's a very unique concept. If you don't know it, you will end up spending 2, 5, 10 minutes in this simple problem, but this is a very good concept। if you like it, share karna and mujhe comment mein batao if you're liking this series, and maybe then I can start it again। Thank you so much and all the very best for your preparation।